More detail about double refraction now we have to see here. This is actual photograph in front of you. Whatever you are seeing here, this is actual photograph of a double refracting calcite crystal. So what do you see in that photograph? सर डबल रिफ्रैक्शन की वजह से पेंसिल की इमेज दूसरी जगह दिख रही है। इमेज किसकी है? पेंसिल की सर। ओके, सो एक पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर एक कैल्साइट क्रिस्टल रखा है। सो कैल्साइट क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट है, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि यू शुड सी वन इमेज ऑफ द पेंसिल। ओके, ट्रांसपेरेंट है इसलिए उसके ऊपर रखा है इसलिए, लेकिन यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिख रहे हैं and these two images are because of the double refraction phenomenon. Let's see what happens inside. ऐसा क्यों होता है? Let's understand. होता यह है कि सपोज यहाँ पे जो है कैल्साइट क्रिस्टल का एक सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, या फिर प्रिंसिपल सेक्शन भी आप उसको बोल सकते हो। अभी होता क्या है, यह है आपका कैल्साइट क्रिस्टल, यहां से यहां तक है आपका कैल्साइट क्रिस्टल। देन unpolarized light is getting incident here, which is indicated by arrow and dot. So this unpolarized light which is getting incident normally on the surface of this calcite crystal. So when this light get incident, immediately that light gets split into two beams. One beam is called as ordinary beam or ordinary ray, and other splitted ray is called as E ray or extraordinary ray. Now why they are so called? It is because of their properties. And why we do get these two beams? It is because of again property of the calcite crystal, or you can say it is because of the arrangement of the molecules in the calcite crystal. We will get two beams or two rays. Now why it is called as ordinary and why it is called as extraordinary? It is called as ordinary because it follows all the laws of optics, like Snell's law. According to Snell's law, all of you know that sin I by sin R is equal to mu, refractive index of the material, and which is constant for a particular material. But for extraordinary ray, it doesn't follow the laws of optics. Like Snell's law, it doesn't follow the Snell's law. For example, sin I by sin R is equal to, it should be equal to mu, but it is not equal to mu. But that sin I by sin R for E ray is variable. This is variable. What is variable? This particular ratio sin I by sin R for E ray is variable. That is equal to mu, we will say. So refractive index for extraordinary ray is not constant. It depends on the direction of the ray. That is very surprising result. Hence, ordinary ray will follow, or it will have the same speed along all direction. अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने चेंज कर दिया, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 90 डिग्री है, लेकिन सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 डिग्री है। सो अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली ओ रे और ई रे दोनों का भी एंगल चेंज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जैसे ही एंगल चेंज हो जाएगा ओ रे का, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ओके, along all direction velocity of ordinary ray remains constant, while extraordinary rays velocity will be different along different direction. Means it will behave differently along different direction, and therefore it is called as an extraordinary ray. Secondly, ये जो दो बीम्स यहाँ पे मिलते हैं आपको, रेज मिलते हैं, so both the rays are now not unpolarized light, but they are plain polarized light. Both are now plain polarized light when they enter in the calcite crystal. That is a very surprising thing. Not just the double refraction, but double refracted rays are plain polarized light. इतना ही नहीं, दोनों का जो वाइब्रेशन है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्रिंसिपल सेक्शन है, तो ऑर्डिनरी रे के जो वाइब्रेशंस है वो
परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन रहेंगे, जो कि यहाँ पे डॉट से दिखाया गया है. So understand the difference. So understand the difference between ordinary ray and extraordinary ray. You should understand and you should remember the differences between the ordinary ray and extraordinary ray. So ordinary rays vibrations are perpendicular to the principal section, while extraordinary rays vibrations are parallel to the principal section. So ये जो होता है, these properties are important here within a crystal. Okay, within a crystal, both the rays O ray and E ray have different direction and different speed. I repeat, in the crystal, both E ray and O ray have different direction and different speed. But as soon as they come out of the crystal and they enter in the air or other medium, normal medium, then you will find that both the rays will have same direction of propagation and same speed of propagation. But still they will be plane polarized light and they will have the vibrations perpendicular to each other. So this is what is the difference between the O ray and E ray. So you can visualize this particular process in 3 dimensions using this third diagram. So this unpolarized light, when it enters in the crystal, it will split into 2 beams. One is ordinary and other is extraordinary. Inside the crystal, both have different speed and different direction, but out of the crystal, both have same direction and same speed. So that is why you see this particular image of the pencil because of this ordinary ray, and you see the second image here of the pencil because of this extraordinary ray. And this is possible only in double refracting crystal like calcite, ice, quartz, tourmaline, etc. Now, डबल रिफ्रैक्शन को बायरिफ्रिंजेंस ऐसा भी बोलते हैं. डबल रिफ्रैक्शन को बायरिफ्रिंजेंस ऐसा भी बोलते हैं. सो दिस अ बायरिफ्रिंजेंस phenomenon. Plus, बायरिफ्रिंजेंस is also a property of double refracting crystal. जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पैरामीटर होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पैरामीटर होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का. ओके, म्यू, ऑल ऑफ यू नो refractive index, like water is having refractive index. Okay, then petrol is having refractive index. So similarly, double refracting crystals are having a parameter that is called as a birefringence. How to calculate this birefringence? Let us see. The ordinary ray has a refractive index mu O is equal to sin I by sin RO, where R is angle of incidence for that ordinary light which is getting incident on the crystal, and RO is angle of refraction for ordinary ray. And the extraordinary ray has a refractive index mu E equal to sin I by sin RE, where RE is angle of refraction for extraordinary ray. Then, in case of extraordinary ray, the refractive index varies with the angle of incidence and it is not constant, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है. Now, what is birefringence? The birefringence of a crystal is defined as birefringence of a crystal is defined as delta mu equal to mu E minus mu O. यानी कि birefringence क्या है? Birefringence simply is difference between refractive indices of extraordinary and ordinary ray. So birefringence मतलब क्या? It is just the difference between the refractive indices of extraordinary and ordinary ray. That is called as a birefringence.
इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी विदाउट एनी यूनिट। इफ mu e is greater than mu o, delta mu is a positive quantity and the crystals in which birefringence, that is delta mu, is positive are called positive crystals. Quartz, ice, iron oxide are positive crystals. You have to remember these examples. You have to remember, you have to understand this positive crystal. You have to remember these examples of the positive crystal. Exactly opposite is a negative crystal. When mu e is less than mu o, then delta mu, ये जो difference आता है वो negative आएगा, and the crystals in which delta mu यानी कि birefringence negative है, these are called negative crystals. उनका examples है calcite, tourmaline, ruby, emerald are negative crystals. प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जल्द से लिखो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। इस चैप्टर में, पोलराइजेशन चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और उसका डेरिवेशन भी हमने देखा है। बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला यू हैव टू सॉल्व दिस। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। थ्योरी होती है तो उसमें भी आएगा, एमसीक्यू होता है तो उसमें भी आएगा। In an experiment, a polarizer and analyzer are set with their polarizing directions parallel, so that intensity of the parallel है पहले, so that the intensity of the transmitted light is maximum. यानी कि क्या, दोनों जो polarizer और analyzer, let's say this is direction of polarizer which is vertical, and this is again direction of analyzer which is again vertical. So angle between them is 0. They are parallel. ऐसा है, दोनों की डायरेक्शन ऐसी पैरेलल है, एंड देयरफॉर लाइट जो बाहर आ जाएगी वो मैक्सिमम रहेगी। थ्रू व्हाट एंगल शुड ईदर बी टर्न सो दैट, तो इसमें हमें क्या करना है, दोनों में से एक को रोटेट करना है हमें, और ये जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। ओके, ये पोलराइजर वैसा ही रहेगा वर्टिकल, अभी इसको रोटेट करना है हमें एनालाइजर को थ्रू सर्टेन एंगल, सो दैट यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम से, मैक्सिमम जितनी इंटेंसिटी है उससे एक बार 50% होनी चाहिए और दूसरी बार 1/4 यानी कि 25% होनी चाहिए। ऐसे दो केसेस है। तो यहाँ पे एंगल कितना रोटेट करना पड़ेगा हमें, थ्रू व्हाट एंगल, सो दिस एंगल इज थीटा हियर, दिस एंगल इज थीटा, तो ये कितना है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो वी कैन फाइंड इट आउट यूजिंग व्हाट, Intensity of transmitted analyzer upon intensity of transmitted polarizer equal cos square theta. correct. So that formula we have to use. So I will write the formula here. Formula हमारा जो है, and what we call that formula? Malus law formula. Correct, correct, very good. This is called as a Malus law. I is equal to Im cos square theta. कभी-कभी Im की जगह I0 भी लिया जाता है, so that's also fine. So I is equal to Im cos square theta. तो ये फॉर्मूला है इसका मालुस लॉ का, ये हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अभी दिया क्या है, व्हाट इज गिवन हियर, सो यहाँ पे क्या दिया है कि सो दैट द इंटेंसिटी बी रिड्यूस टू 50%, यानी कि मैक्सिमम अभी आपको जो इंटेंसिटी मिल रही है वो कौन सी है, आई है। ओके, एंड इट इज हाउ मच कंपेयर टू द आई मैक्स, ओके, इट इज 50%. Therefore, I by Im is equal to 50%, and that is nothing but half, isn't it? तो ये पहली इंफॉर्मेशन आपको दी है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दी है आपको, इंटेंसिटी बी रिड्यूस टू 1/4. ओके, अगर इनिशियल इंटेंसिटी आपकी इतनी है, एक मिनट, I by Im इज इक्वल टू, इट विल बिकम 1/4, यानी कि आपकी इनिशियल इंटेंसिटी अगर 4 है तो अभी कितनी होगी, 1 होगी। 1 इज 25% ऑफ 4, ओके, तो 1/4 यानी कि 25%। तो हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पे है। यूजिंग दिस टू इंफॉर्मेशंस डेटा वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग दिस फॉर्मूला मालुस लॉ का। सो फ्रॉम मालुस लॉ आई कैन राइट I by Im is equal to cos square theta. सो हमारा फर्स्ट केस जो है, इन फर्स्ट केस
I by IM is equal to 1 by 2 and therefore 1 by 2 is equal to cos square theta, क्योंकि हमने ये वैल्यू ऊपर रख दी यहाँ पे फॉर्मूला में, so we have got 1 by 2 is equal to cos square theta and therefore cos theta is equal to 1 by square root 2. अभी यहाँ पे प्लस और माइनस भी आ सकता है, मतलब आता है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो प्लस और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 by square root 2 and therefore theta is equal to किस एंगल का cos 1 by root 2 आता है? 45 degree. 45 degree, correct. Okay, so angle theta should be 45 degrees. सभी का आंसर आ रहा है ये 45 डिग्री? Yes, sir. Yes. Okay, so we can write it plus or minus 45 degrees. Now second case we will take. Second case में I by IM is equal to 1 by 4 and therefore we will put this value in the cos square theta, हमारा जो एक equation number 1 है formula उसमें हम रखेंगे and therefore we will write here 1 by 4 equal to cos square theta and therefore taking square root cos theta is equal to plus or minus square root of 4 is 2 and therefore we will get theta is equal to plus or minus कितना आएगा 1/2. कितने एंगल का cos 1 by 2 आता है? 60 degree. 60 degree. Okay. So in this way डिग्री लिखना जरूरी है, यहाँ पे नहीं लिखा तो मार्क्स जाएंगे आपके. रिमेंबर दैट यू शुड राइट द आंसर विथ यूनिट्स. ओके, यहाँ पे भी डिग्री लिखना. देखो मैंने डिग्री लिखा है यहाँ पे मैंने डिग्री का साइन दिया है, सो दैट इज एसेंशियल, नहीं तो आपका जो है आधा मार्क थ्योरी में कट हो सकता है. सो यू हैव टू ऑलवेज राइट द आंसर्स विथ यूनिट्स.